will help me and all of us and this project sail through with flying colors. And I go back to the 9th of November 2012, about 13 years ago. It was the birth anniversary of Allama Iqbal. There was a big event held in Lahore where Imran Khan was the chief guest. And it was held at the Aiwan-e-Iqbal, which is a big hall. And there were about 3 or 4, I was one of the speakers, and the 3 or 4 speakers, including Imran Khan himself, were all non-political personalities. They were intellectuals, writers, journalists. And when one particular speaker came and started his speech in Urdu, he said कि जी आज अल्लामा इकबाल के पैदाइश का दिन है और चीफ गेस्ट जो है वो इमरान खान है, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं बात शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ पर करूँ, क्योंकि अगर बात शुरू अल्लामा इकबाल से होती है तो वो ख़त्म इमरान खान पर होती है, और अगर शुरू इमरान खान से होती है तो ख़त्म अल्लामा इकबाल पर होती है. So I was thinking about a trip I made to India 10 years ago, exactly this time of year, May, June of 2015. Us waqt there was some cordiality in the relations between the two countries. There was a twice a weekly flight from Lahore to New Delhi on PIA, and it was still Narendra Modi's first term as Prime Minister, but the hostile atmosphere had not emerged until then. So I was invited to speak. I was invited by the head of the Urdu department at the Delhi University to come and speak to the Urdu faculty. And when I got to the Delhi University, I was invited to come into a classroom, और वो उर्दू के तमाम प्रोफेसर्स वहाँ बैठे हुए थे, और head of the Urdu department was my host. So I addressed the teachers, all the Urdu professors in the classroom, and I talked about Pakistan, I talked about the Urdu language, I talked about Allama Iqbal, obviously all their areas of interest. And then we went to the staff room for a cup of tea. और वो staff room में my host was sitting, we were sitting at kind of the head of, sort of a circular seating arrangement. And there were all these 12 or 15 Urdu professors. And somehow the conversation turned to, Urdu poets and Urdu poetry. And one professor started by quoting from Ghalib. कि जी Ghalib का ये कितना खूबसूरत शेर है, उन्होंने एक शेर पढ़ा. And then the next professor talked about Mir Taqi Mir का कितना अच्छा शेर है. All the great Urdu poets, किसी ने फैज़ अहमद फैज़ का शेर पढ़ा, किसी ने दाग दहलवी का शेर पढ़ा, किसी ने हैदर अली आतिश का शेर पढ़ा, किसी ने मीर दर्द का कोई शेर पढ़ा, एक से एक खूबसूरत शेर, और कहा कि जी कितना खूबसूरत शेर है सच एंड सच पोइट का. और मैं चुप बैठा था, मेरे मेज़बान भी, होस्ट भी चुप बैठे थे. जब सारे प्रोफेसर्स ने किसी ना किसी ग्रेट पोइट का कोई ना कोई ग्रेट वर्स जो है वो बड़े खूबसूरती से रिसाइट करके ख़त्म हो चुके थे, तो the host, the head of the Urdu department, said to all of them कि जी आपने बहुत बड़े बड़े शायरों का बहुत आला कलाम और बड़े अच्छे अशआर पढ़ के सुनाए हैं, लेकिन मुझे एक नज़म उससे ज़्यादा खूबसूरत ला के दिखा दें कि जो कि अल्लामा इकबाल की लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. The poem is titled बच्चे की दुआ, जो कि अल्लामा इकबाल ने 1903 में लिखी थी, लेकिन it is more known by its first verse कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कितनी generations represented हैं, तो let's go back to the childhoods of so many of you who are sitting here, because मैं जानता हूँ, और पिछले 2-3 दिन में मेरी जो इनफॉर्मल मुलाकातें यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानियों से हुई, उनके मैं नॉलेज को भी टेस्ट करता रहा हूँ. ये नज़म बहुत लोगों को बड़ी अच्छी तरह आती है, लेकिन जस्ट फॉर ईज ऑफ रेफरेंस मैं उसके 6 शेर आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अपना बचपन भी याद आ जाए. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी. ये किसकी फरमाइश थी कि तरन्नुम से पढ़े?
میں ایک شعر ترنم سے پڑھ دیتا ہوں. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ٹھیک ہے جی, آپ کی خواہش بھی پوری کر دی. زندگی ہو میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اب اس نظم کے I think there are 5 messages which obviously کسی بچے کی تمنا, the heart's desire of a child that rises to the lips in the form of a prayer. The prayer has 5 elements and hence I believe it has 5 messages. اور وہ میں آپ کو اپنے طریقے سے بتانا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں. سب سے پہلا میسج جو ہے is to take away the world's darkness. When the longing comes to the lips, the desire comes to the lips in the form of a prayer, it is to make me in the form of a shining candle so that جس کے دم سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اور جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالا ہو جائے. تو میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی محفل کی جو شمع جس نے دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کا ٹھان لیا ہوا ہے اور جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالا ہونے کی بات ہوتی ہے, وہ کیا عمران خان نہیں ہے؟